Wow, this looks beautiful. What is it? Yes, this is the solar system. See the sun in between, shining so bright? And all are the planets. Even you could see the stars here. Not only the stars, you could even see the asteroids. So, this is what our solar system is made up of. Now, let's see to that in detail. The solar system is made up of the sun and all the smaller objects that move around it. Apart from the sun, the largest members of the solar system are the 8 major planets. 8 major planets. Nearest the sun are 4 fairly small rocky planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars. Yes, nearest to the sun are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Now, our solar system, and let's see its 8 planets which orbit around the sun, which move around the sun. Let's see to it. In order of distance from the sun, they are Mercury, Venus, E for Earth, M Mars, J Jupiter, S Saturn, U Uranus, and Neptune. So there is an easy way to learn it. My very efficient mother just served us nuts. My means M for Mercury, very, V for Venus, efficient, E for Earth, mother, M for Mars, just, J for Jupiter, served, S for Saturn, it's Uranus, and nuts is for Neptune. Interesting way, isn't it? Now the first planet. Yes, I am Mercury. I am closest to the sun. I am of grey color. I have no atmosphere. See, Mercury पे कोई atmosphere नहीं होता. Right? No rain, no nothing, no atmosphere at all. Now, let's see the second one. I am Venus, and Venus आप सबको पता है second planet है from sun, and Venus is the hottest planet, and Venus has no moon. कोई moon नहीं है Venus पे. Now, which planet is this? Oh, this seems like our own Earth. Yes, I am your home. Earth हमारा घर है. We all live on our Earth. I am the third planet for the sun. ये Earth is third planet from the sun. And I have only one moon. Yes, that we see at night. Next is the fourth planet. I am the Mars. My nickname is Red Planet. Remember the movie Mangalyaan? It was based on this thing, Mars mission. Yes. So Mars is a red planet. I am the fourth planet from the sun, and I have 2 moons. Interesting. Mars have two moons. I am Jupiter. I am the 5th planet from the sun. And Jupiter is the largest planet. And Jupiter has 53 moons. How many moons? 53 moons. I am Saturn. I have largest ring. See the ring around it? I am the 2nd largest planet. In size I am talking about. सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है इन साइज? जुपिटर. और उसके बाद इन साइज कौन सा प्लैनेट बड़ा होता है? इट इज सैटर्न. आई एम द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन. जब हम इसकी प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये सन से 6th प्लैनेट है. नाउ आई एम यूरानस. I am light blue planet. Uranus is of light blue color. Uranus is 7th planet from the sun, and it is the coldest planet.
बहुत ठंड होती है इस प्लैनेट पे, पता है क्यों? सन से बहुत दूर है, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. आई एम नेपच्यून. I am a blue planet. Remember, Uranus was light blue and Neptune is complete blue planet. Eighth planet from the sun. And Neptune has 6 faint rings. How many rings here? 6 faint rings. Faint का मतलब बहुत light rings होते हैं. Now बच्चे, I am the sun. You also know that sun is a star, and in the solar system we easily find the stars. So sun is a star. All planets orbit around me. What is orbit? Moving on a fixed path around the sun. They move along a fixed path in the sun. I provide earth with warmth. मतलब हमारी अर्थ को जो गर्मी देता है, जो सनलाइट देता है, वो इसी सन से आती है. नाउ लेट्स सी हु इज ही. ओ ही इज एन एस्ट्रोनॉट. एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन जो कि स्पेस में जाता है. लेट्स सी व्हाट इज इट. एस्टेरॉयड. व्हाट इज एन एस्टेरॉयड? दे आर द स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन. ये बच्चे ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? आई एम अ रॉकेट. आई एम नॉन रीयूजेबल. मुझे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते because the vehicles that go into the space, and it is one of the vehicle that go into the space. Now I am a star. A star is a huge glowing ball of hot gases. और स्टार कौन सी गैसेस से बना होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. डू रिमेंबर दैट. Stars are made up of the glowing ball of hot gas. And which is this hot gas? Hydrogen and helium. Dear students, so we had already checked out the solar system. So the solar system consists of the sun, the 8 planets that revolve around it, and many more heavenly bodies. और ये जितने भी planets होते हैं ना, they have their fixed orbits. Now you will say, ma'am, what is an orbit? Orbit is a fixed path in which planet revolves or moves around the sun. मतलब जिस पाथ के ऊपर एक planet sun के अराउंड मूव करता रहता है, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. Now the 8 planets are, you know it very well, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Learn it. My very efficient mother just served us nuts. ये लाइन के फर्स्ट वर्ड हमारे planets के names हैं, आप कभी भी नहीं भूलोगे. Now you should remember all these revolve around the sun in their own orbits. The size of a planet. Now let's see. सबसे बड़ा किसका साइज होता है planets में से? सबसे बड़ा जो planet है that is Jupiter. उसके बाद थोड़ा सा छोटा is Saturn. Then comes Uranus, Neptune, फिर Earth, Venus, Mars, and finally the smallest planet is Mercury. Now there are the other heavenly bodies like the dwarf planets. Dwarf means small planets. एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, हमने अभी देखा है. हॉट बर्निंग बॉल ऑफ रॉकी सा सब्सटेंस जो कि कई बार पास से होकर निकल जाता है सन के. कई बार हम सुनते भी हैं कि अर्थ इज गोइंग टू बी हिट बाय सम एस्टेरॉइड्स, इजंट इट? कॉमेट्स एंड इन आवर सोलर सिस्टम बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं. The sun along with 8 planets, their satellites, the dwarf planets, the asteroids and the comets together form the solar system. ये सारे कौन सा सिस्टम बनाते हैं? Solar system. Now till some time back, Pluto was also considered as a 9th planet. But now Pluto is not a 9th planet. Since 2006, Pluto को हमने categorize कर दिया as a dwarf planet now, right? If there are the planets of the solar system, then what is a moon? बच्चे, let's see regarding the moon now.
Now, moon is particularly one of the satellite of earth. Is that clear? Satellites क्या होते हैं? Heavenly body that revolve around the planet in their own orbit. अपने एक fixed path के अंदर जो एक किसी भी हेवनली बॉडी के अराउंड मूव कर रहे हैं उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं. इज दैट क्लियर? एंड नेचुरल सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द मून्स. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अर्थ पे एक ही मून होता है जो कि हमें रात को दिखता है. इजंट इट राइट? सो लेट्स सी टू इट. और एक और प्लैनेट के अंदर हमने पढ़ा था कि उस प्लैनेट पे 2 मून्स होते हैं. आई थिंक वीनस हैज़ 2 मून्स और मार्स हैज़ 2 मून्स. We'll have to check it out. I'll tell it to you later on. So just try to understand. Yes, Mars has 2 moons. Now, bacha, let's see to it. What is it? Can you find out how many satellites or moons each of the other planets have? Yes, I have told you. Earth has 1 and Mars has 2 moons, right? Let's see to it, bache. When I talk about the planets in the solar system, planets in our solar system are divided into 2 groups. The inner planets means the nearest to the sun. Mercury, Venus, Earth and Mars. 4. और इसके बाद जो 4 planets रह जाते हैं, they are the outer planets. Is that clear? ये जो inner planets हैं, ये small हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं विथ सॉलिड सर्फेसेस. इज दैट क्लियर? और इनके सर्फेस बहुत सॉलिड हैं. लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, दे आर द बिगर प्लैनेट्स. इज दैट क्लियर? और जो इनकी सर्फेस है ना, दैट इज गैशियस, मेनली मेड अप ऑफ द गैस. किससे बनी होती है? गैस. देयर इज नो सॉलिड सर्फेस हियर. जुपिटर पे कोई सॉलिड सर्फेस नहीं है. सैटर्न पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है. यूरानस पे, नेपच्यून पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है. वहाँ पर जनरली गैशियस नेचर है. नाउ बच्चे लेट्स टॉक अबाउट. वैसे तो मैंने आपको मर्कुरी के बारे में भी बताया. मर्कुरी इज अ प्लैनेट दैट इज नियरेस्ट टू द सन. येस, मर्कुरी इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट. Days are extremely hot here and nights are extremely cold on this planet. No atmosphere at all. No satellites or no moons on Mercury. Do remember that. Let's talk about Venus now. Venus is a planet nearest to the Earth. Venus nearest to the Earth है and similar to Earth also in shape, size, weight and gravitational force. Do remember, Venus और Earth में बहुत similarity है. It does not have an atmosphere. इसका कोई atmosphere नहीं होता. Like इसके अंदर मतलब atmosphere with components like कोई components नहीं है. Sorry, it does. Now, bache, let's start about Venus. Venus is a planet nearest to the Earth and it is almost similar to the Earth. ये बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है. अर्थ जैसे ही दिखता है शेप में, साइज में, वेट में और ग्रेविटेशनल फोर्स में. इट डज हैव एन एटमॉस्फेयर. इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट लाइक सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड. So Venus is called the morning star and the evening star because during morning and evening we can see this planet clearly in the sky. हम इसको clearly sky में देख सकते हैं Venus को. Venus too doesn't have any satellites. Venus की भी कोई satellites नहीं है. What is a satellite? Yes, moon. Is that clear? Now we talk about the Earth. Earth is the third planet from the sun. इट इज़ ओनली प्लैनेट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम रहते हैं. बच्चे आपको पता है ना, 70% ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर. 70% किससे बना है? वाटर से बना है. और बाकी एरिया जितना रह जाता है वो लैंड है. सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इट लुक्स ब्लू. तभी हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. And you should remember, Earth has one satellite and that is Moon. Satellite means something that is moving around our planet on a fixed path. और आपको पता है ना, Moon moves around the Earth, right? This moon you can see in the sky also, night sky. Next is Mars.
Mars is called a red planet. This is because the soil on the surface जो है वो रेडिश कलर की है. और मार्स की 2 सैटेलाइट्स होती हैं, 2 मून्स हैं, एक फोबस और एक डेमोन्स. इज दैट क्लियर? लेट्स सी टू इट. नेक्स्ट इज जुपिटर. बच्चे जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम और इसका जो डायमीटर है इज 11 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ. देखो कितना बड़ा प्लैनेट है. और जो इसकी सरफेस है ना इज गैशियस इन नेचर, गैस के बनी हुई है. एंड इट हैज़ 79 नोन सैटेलाइट्स और मून्स. और कितने मून्स हैं इसके ऊपर? 79. डू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट इज Saturn. Saturn is the second largest planet. Second largest planet है. And 7 rings around it. और कितने rings हैं इसके around? 7 rings हैं. और कितने satellites और moons हैं? 82 satellites और moons. Now बच्चे let's discuss about. Now बच्चे let's start about the Uranus. Uranus is the third largest planet in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम का जो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो यूरेनस है. एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड द लॉपसाइडेड प्लैनेट. क्या नाम देते हैं हम इसको? लॉपसाइडेड प्लैनेट. एज इट्स एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 98 डिग्रीज. क्योंकि जो इसकी एक्सिस है वो 98 डिग्रीज की तरफ टिल्टेड है. लॉपसाइडेड का मतलब एक तरफ झुका हुआ है. एंड इट हैज़ 27 सैटेलाइट्स और मून्स. कितने मून्स हैं बच्चे? 27 सैटेलाइट्स और मून्स. लेट्स टॉक अबाउट नेपच्यून. नेपच्यून इज अ वेरी फार फ्रॉम अर्थ एंड इट टेक्स अबाउट 165 years to go around the sun, right? Neptune has 14 moons and it is quite cold on this planet. Neptune पे बहुत ठंड है, right? So बच्चे let's see. Between Mars and Jupiter there is a belt of rocks called asteroids. मैंने आपको asteroids बताए थे ना? Rocky substances, very hot, that moves again around the sun. So this asteroid belt contains about 1.1 to 1.9 million asteroids. कितने मिलियन है? 1.1 to 1.9 million asteroids are there. The largest heavenly body in this asteroid belt is Ceres, which is a dwarf planet. It is about 950 kilometers in diameter. And asteroids too move around the sun like the other planets. This is what I have told you earlier. Now rest we'll do tomorrow. This was all about the planets. Even in the animated form I have told you, and even from your book we had done.